कथारे अछि प्रिभेन्शन इज बेटर दैन टू क्यूर। आजिर आधुनिक जीवनशैली लोकंकु नानादी रोगरे पकाउछि। अन्यपटे 2047 सुद्धा जो विकसित भारतर लक्ष्य रखा जाइछि सेथिरे स्वास्थ्य गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिब। तेणु भारत सरकारक तरफरु विभिन्न प्रकार पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि। रोगर चिकित्सा अपेक्षा रोग पूर्वरु तार प्रतिरोधक पाई भारतकु एबे दीर्घकालीन स्वतंत्र रणनीति प्रस्तुत करबाकू हेबो। एई क्षेत्र रे कोहोर्ट स्टडीज मुख्य भूमिका निर्वाह करिबो बोली केंद्र विज्ञान और प्रजुक्ति राष्ट्रमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहिसंती। गुरुवार CSIR-IMMT भुवनेश्वर थारे लंगिट्यूडिनाल कोहोर्ट स्टडीज उपरे 2 दिनिया जातीय सम्मिलनी कोहोर्ट कनेक्ट को उद्घाटन करी मंत्री एहा कहिसंती। देशर जनसंख्यार प्राय 70% 40 वर्षरू कम रहिसंती। तेणु भारत को रोगर निवारण प्रारंभिक प्रतिरोधक एवं प्रजुक्ति विद्या चालित स्वास्थ्य समाधान को प्राथमिकता देबाकू हेबो। And that too on an eventful day, on the eve of the World Diabetes Day, which is being observed across the world tomorrow, on the 14th of November. And this is a study which is going to evaluate some of the basic determinants of health in the current age and times, namely the biological factors, the environmental factors, the genetic factors, the life disease factors, which also determine the vulnerability or susceptibility of individuals for a disease. And that we are going through an era of metabolic disorders like type 2 diabetes mellitus, coronary artery disease, dyslipidemias, etc., etc. And our new initiation would be in the area of genes, genetic regimes for prevention and genetic therapies for cure. You will be glad to know the same ministry through the Department of Biotechnology has come out with the first ever successful genetic therapy trial in hemophilia, which is a blood bleeding disorder. ए कार्यक्रम रे CSIR-IMMT निर्देशक रामानुज नारायणन कहिसंती एही प्रयास कौनसी रोग हेबार पूर्वानुमान एवं निवारण आड़कू नहीं थाए। सर्भेर सर्वनिम्न अवधि 3 वर्ष रही। 2023 डिसेम्बर 7 रे 10,000 लोकंकु नहीं एक अध्ययन आरंभ होईछि। आउ गोटिए वर्ष परे एही अध्ययन द्वारा संपृक्त व्यक्तिंकर जेनेटिक्स, जीवनशैली, खाद्य एवं परिवेशगत कारकर तथ्य जना पड़िबो। जनकर सर्भे प्रोफाइल को आधार करी कौनसी रोगर लक्षण देखा देबा पूर्वरु ताहाकु आकलन करिबारे सहायक होइथाय। एहा द्वारा प्रत्येक भारतीय स्वास्थ्य को सुरक्षित एवं अधिक पूर्वानुमान करा जाई पारिबो बोली निर्देशक कहिसंती। So today we have organized a 2 days conclave on the longitudinal cohort studies. If India is looking for the Viksit Bharat, in that place it is a pan CSIR program where we are taking sample of 10,000 people across the country. Right now it is limited to CSIR staff and their family, and the most importantly it is as per their willingness, because somebody do not want to share their test results. When you are going to a doctor, what is this cohort is, when you are going to a doctor, they will write you prescription that you have to do this test, that test and all. So in this cohort study, starting from blood sugar test to heart test to lung test to a stool that it is called gut microbiome test and this strength test. So all set of parameters, and this place doctor plus our coordinator from CSIR-IGIV is the prime lab led by Dr. Saubik Maiti, Shantanu Sen Gupta and Dr. Sardana. Sardana himself is a MBBS. So in this case what will happen, what 2 series it has been done. 3 times you have to take sample of these tests, same people, that what is happening. One time you cannot correlate. So 3 years is the minimum requirement. So we are doing already completed phase 2. Today is the completion, celebration, the study interactions with this.
and what it will give. Today you have seen doctors from all across the country. ସମ୍ମିଳନୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିବେଶନରେ ସମନ୍ୱିତ ରୋଗ ନିରୂପଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ CSIR IGIB ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ସୌଭିକ ମାଇତି, CSIR CCMB ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ବିନୟ ନନ୍ଦିଗୁରି, BRIC ILS ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। So, in India, despite being independent for almost 80 years, we do not have our own standards. We do not have our real values of, say, cholesterol or anything. These all values are from Western population. We also do not have any marker for disease. So, whether a person is more prone to getting cardiovascular disease or whether a person could in future get diabetes, these all can be predicted by equations using certain parameters. And in Western world that is there. For example, risk of cardiac disease in 10 years. There are several studies and each country has their own standards. But the best equation that we use from the West can only tell 60% correctly in our case. So it is like a toss of a coin. नमस्कार, मोर नाम डॉक्टर मनीष कुमार हेला और आज जा खनिज पदार्थ अनुसंधान संस्था रे जा गवेषणा पाई माने गोटे वर्कशॉप चलुची। मुख्य उद्देश्य होची जा हेल्थ सेक्टर रिलेटेड माने विभिन्न CSIR लैब रे माने रिसर्च चलुची कि केमतिया माने जे कोविड पड़े उपरांत लोक जे एफेक्ट हो जाइथिले तार माने स्वास्थ्य रे पैरामीटर केमती भैरी करूची। मेन इश्यू होची लोक को बुझीबा कथा कि कोविड उपरांत तार हार्ट रे केमती एफेक्ट हैला, किडनी रे केमती एफेक्ट हैला, लिवर केमती एफेक्ट हैला। सो सेटा पैन इंडिया नेटवर्क रे कोहर्ट प्रोग्राम माने गोटे परियोजना हेछि CSIR भितरे IMMT रे एठी डॉक्टर उमाकांत सुबुद्धि माने से प्रोग्राम को लीड करूछंती और ए प्रोग्रामटा माने स्वास्थ्य रे जेमती जड़ित तो सब लोक को ए डाटा माने बेनिफिशियल हबो जेई समय तार परियोजना रिपोर्ट आसीबो। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन पंकज का सह नक्षत्रंक रिपोर्ट, धरित्री लाइव। एई भिडियोटी आपनकु केमिति लागिला कमेंट करि जणांतु। धरित्री लाइव रो YouTube एवं Facebook चैनल को सब्सक्राइब करंतु। अधिक खबर पई लॉगिन करंतु www.dharitri.com।